Hello and welcome. So we are going to continue with our chapter which was nutrition in animals. So like we have talked about the digestion in human beings, right? So हमने उसमें क्या start करा था that our food was ingested in our buccal cavity. So buccal cavity से हमारा food कहाँ पे गया था? Oesophagus, right? We talked about different digestive enzymes in small intestine. So now we are going to talk about absorption in small intestine. Okay, so start writing. So the blood vessels in the wall of intestine absorb the digested and water soluble substance that produce energy for growth and development in animals, right? So the inner walls of small intestine have thousands of finger-like structures. Finger-like structures is called villi. villi. Okay. Now see guys, हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा मेन डाइजेशन हो रहा है, लाइक मोस्ट कंप्लीट डाइजेशन वो कहाँ पे हो रहा है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है. So basically what was happening in a small intestine, that the food was digested with the help of different digestive juice, pancreatic juice and bile juice, which was coming from the liver and pancreas, right? So now what is happening, जो हमारा small intestine में जो small intestine की जो walls होती है, क्या हो रहा है? वो हमारा digested food को उसमें से क्या absorb कर रही है? Nutrients absorb कर रही है. That nutrition is helpful for our growth, क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. ये हमने पढ़ा था, दैट वाज अ वेरी बेसिक लाइन. सो ग्रोथ और हमारी बॉडी में जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो कौन हेल्प कर रहा है? हमारे ये एनर्जी हेल्प कर रही है, जो कहाँ से आ रही है? हमारे फूड से आ रही है, राइट? सो all the digested food, all the nutrients is absorbed by the wall of small intestine. So ऐसा क्या होता है उस small intestine की wall में जो हमारे nutrition को वो absorb कर रहा है? So see, so the inner wall of the small intestine have thousands of finger-like structures, right? So for example, these are the walls of small intestine. So क्या होगा? यहाँ पे हमारा ऐसे finger-like structures होंगे, okay? Like thousands of finger-like structures दोनों side. So यहाँ से जो भी हमारा food cross होगा, क्या करेंगे? जो finger-like structures है, that will absorb the food from the digestive food, right? So they will absorb the nutrients. Now see, the inner wall of the small intestine क्या होती है? उनके पास thousands of finger-like structures है. finger-like structures है दोनों side wall के, right? So finger-like structures को हम क्या बोल रहे हैं? villi बोल रहे हैं, right? villi. So what is villi? The finger-like structures which are present inside the small intestine, right? I hope this thing is clear to you. So let's continue. So the glucose breaks down into carbon dioxide and water and release energy, right? With the help of oxygen inside the cell. So the fatty acid and glycerol help in building the components of cells and forms fat, which is stored in our body. See, this is a very basic paragraph. ये मैंने आपको बताया था. क्या हो रहा था कि जो ग्लूकोज होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है हमारे दो मॉलिक्यूल्स में, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. कैसे रिलीज होती है वो, कैसे वर्क करता है? दिस ब्रेक डाउन इट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ सेल, एंड बिकॉज ऑफ दिस सेल व्हाट हैपन,
द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज रिलीज, और जो भी एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज होती है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट, राइट? So I told you that there are two type of fat. First is good fat and bad fat. So what is a good fat? Good fat which provides us energy, right? But the bad fat, like when we eat more and more food, जो क्या करेगा, बहुत सारा फैट स्टोर करेगा हमारी बॉडी में, that will be like less helpful, और हमारी बॉडी में डिसीजेस हो जाएंगे because of that, right? I hope this is clear. So now see, our food is being digested in the small intestine because of all the digestive juice. So now our food will move forward to the large intestine, right? Large intestine के बारे में लिखा है. It is 1.5 meter long tube. It is wide and shorter than small intestines. ठीक है? So the undigested semi-solid food is passed into the large intestine, right? कहां से आता है फूड? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है. कहां पे आ रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है, राइट? So now the remaining waste material then pass to the rectum and remain there for some time, in form of semi-solid. Okay, now see, this is a very easy part of the chapter. So हमारा जो फूड था स्मॉल इंटेस्टाइन में, एवरी डाइजेशन हैपेंड. सो व्हाट हैपेंड, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ पे आएगा? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा. सो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होती है? 1.5 मीटर. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? मैंने आपको बताया था, इट वाज अराउंड 7 मीटर. सो व्हाट हैपेंड, इट इज नैरो, ओके, बट लार्ज इंटेस्टाइन इट इज वाइड. So as compared to the small intestine, our large intestine is wider than the small intestine, right? और वो short भी होती है. So what happened? All the undigested food, जो भी हमारा undigested food होता है वो कहाँ पे आता है? हमारा large intestine में आता है, right? This thing is clear. So what happened? अब जो undigested food होगा, अब उसमें कोई nutrient तो बचा नहीं है. Now that is waste for us. So that food will move forward to the rectum. And what will happen? That will remove from our body in the form of semi-solid form, right? So now, large intestine का सिर्फ एक ही important function होता है, that is, it absorb the water, right? जो भी excessive water या फिर कुछ अगर nutrient बच गए हैं, so उस undigested food में से वो extra water just वो absorb करता है, right? So what is about the large intestine? It is just 1.5 meter long tube. It is more shorter than the small intestine, but it is more wider, right? So what happened? जो भी undigested food होता है वो हमारा large intestine में आया और वो rectum पे गया. क्यों गया? Just because it is undigested, जो important नहीं है, और क्या होगा हमारी body के लिए? वो toxic होगा. That is why that need to be removed from the body, right? So I hope this is clear. Okay. So for the next lecture we are going to start a new topic about some diseases like diarrhea and all. So our digestion is cleared and over. So first we talked about the buccal cavity, right, which was our mouth. Okay, from there हमारा जो food था वो oesophagus में गया था, which was our food pipe, right? From the food pipe our food went to stomach. Okay, so हमारा food कैसे travel हुआ? buccal cavity, oesophagus, stomach, फिर small intestine, then large intestine, और large intestine के through वो कहाँ गया? rectum के through वो बाहर गया body से, because that was toxic for our body, right? I hope this is this digestion in human is clear, because this is a quite important topic. You need to remember all the digestive enzymes that are being released in the small intestine, and every function, every
step has their specific functions, right? I hope this is clear. Thank you for